I'm back. The last class we had finished off with the implementation of Mandal Commission, why it was necessary and what led to the development and how it was perceived. उसको लोगों ने कैसे लिया था ये हमने पढ़ा था in the last class. मतलब हम वहां पर we had taken off the break. Now we are going towards the next one, that is the political fallout and rise of BSP as a superpower, as a political power, as a national power. The 1980s also saw the rise of political organizations of the Dalit. ये वाला एक चैप्टर था, बहुत पहले था, मतलब that has been removed. उसके अंदर there were number of वो था किसान सभा, ये सारी कुछ थी तो उसके अंदर this was particularly mentioned कि how it actually came up. In 1978, the Backward and Minority Community Employees Federation, BAMSEF, it is a very, strong party, organization which gives the support at the same time, puts the pressure also. कभी कभी इसको जो है प्रेशर ग्रुप के नाम से भी हम जानते हैं. It is also called as a pressure group because it pressurizes the government for various policies. The organization was not an ordinary trade union of the government employees, but it took a strong position in favor of political power to Bahujan. The SC, ST, OBC minority, inko Bahu means many. And it was out of the subsequent Dalit Social Samaj Sangharsh Samiti, and later it was renamed as BSP. मतलब बामसेफ से आपके जो है द पीपल हु वर इन्वॉल्व, उन्होंने जो है दे हैड कम आउट विद दिस. जैसे हमारा ये अन्ना हजारे जी ने जो जो मूवमेंट स्टार्ट किया था एंटी करप्शन फॉर द लोकदल बिल, जो लोकदल बिल के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था. So when this movement started, it was supported by many people, including Kiran Bedi, Arvind Kejriwal, Brij Bhushan, like this. And वहीं से आपका जो है आम आदमी पार्टी जो है that came into existence. So such movement, struggles, pressure groups often gives one positive effect to politics. The BSP began as a small party supported largely by Dalit voters in Punjab, Haryana, and UP. But in 89 and 91, it achieved its breakthrough in UP. और इसीलिए आज भी हम BSP का जो main base है ना, हम लोग UP बोलते. This was the first time in independent India that a political party supported mainly by Dalit voters that achieved this kind of political success. क्योंकि उससे पहले हम लोगों के पास जो parties थी, they were never based on any religion, they were never based on any particular any community. It was only a political philosophical party. अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस लेते हैं तो CPI लेते हैं, ये फिलोसफीज में अलग थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे या जिस चीज के लिए वो काम करना चाहते थे वो बिल्कुल अलग. इनफैक्ट द BSP अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम envisaged an organization based on pragmatic policy. It derived confidence that Bahujans constituted the majority of population and were formidable political force on the strength of their number. Since then, it has emerged as a major political player in the state and has been in government for more than one occasion. बहुत मतलब कि strong रहा है. Its strongest support still comes from Dalit voter, but अब और social groups भी इसको support करते हैं. They are now in many parts. Dalit politics, OBC politics have developed independently and often in competition with each other. क्योंकि दलित और ओबीसी दो मतलब की जो ये पॉलिटिक्स है, दे हैव ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन इन आवर पॉलिटिक्स सिंस दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ कमिंग इनटू द मेन पावर. लेकिन आफ्टर दिस दे हैव अचीव दैट पावर इन मेनी ऑफ द एरियाज. This is
what we call as communalism, secularism and democracy. A very big question. एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जब स्टार्ट हुआ था, उनका वो जो एक मेन तत्व था हिंदुत्व, दैट वाज वेरी, इट वाज टेकन लाइक अ रिलीजियस structure, but it was not based on religious structure, it was based on culture. So how did it develop? Communalism refers to religion. Communalism refers to community politics. Secularism, it is relating to equality. And democracy is, of course, the practice which we bring. The other long-term development during this period was the visible rise of politics based on religious identity, leading to a debate about secularism and debate. क्योंकि हमारे यहाँ पर secularism and democracy, because in our country, our constitution does not permit any religion to be the super religion. और यही वजह थी कि वो डिबेट बन गया था. When the word Hindutva came to, it became a debate. This was the reason. क्योंकि हमने religious मतलब कि वो जो था वो नहीं करते थे पहले. No doubt अभी we are having. After the aftermath of emergency, the Bharatiya Janasangh had merged with Janata Party, and when Janata Party fell out and its breakup, the supporters of erstwhile Janasangh formed the BJP. In 1990, ये 1 mark में आता है. So in the initial, it adopted a broader political platform that Janasangh did not. BJP embraced Gandhian socialism. और Gandhian principles हमारे क्या है? Equality. Along with cultural nationalism as its ideology. But it did not get much success in 84. In 86, it began to emphasize nationalism as a core of its ideology. जो उनका nationalism था वो था from Kashmir to Kanyakumari, it should be one. And it also pursued the politics of Hindutva for political mobilization. Hindutva was popularized by Vinayak Damodar Sarvakar as the base of Indian nationhood. It means to be Indian, one must accept, अगर आप खुद को Indian बोलते हो, तो you must accept India as their Pitrabhu, where you are given birth, as well as their holy land Punyabhu, and they argue that a strong nation can be built on united national culture. And for this, they believe Hindutva can provide this base. तो ये उनका मेन मतलब की टर्म था, which has always been in debate, कि whether अगर हम हिंदुत्व लेते हैं, तो does it provide secularism? So it is not talking about religion. It is not talking about religion. It is talking about Hindutva, culture. उस दिन आपको मैंने समरी में बताया था, like in Indian culture, it is अतिथि देवो भव. और हमने उसको अपने G70 वाले जो समिट है उसके अंदर हमने उसको लिया था. So that is the element. Two developments, very, very important, became around 1986 became central to politics of BJP. मतलब कैसे बीजेपी ने सपोर्ट किया, क्योंकि पहले यही माना जा रहा था कि बीजेपी मतलब हिंदुत्व यानी कि रिलीजन को कह रहा है, लेकिन हाउ द टेबल टर्न्ड, दो कौन से ऐसे डेवलपमेंट हुए जिससे कि वो जो सोच थी लोगों को समझ आया कि व्हाट दे वांट टू से. द फर्स्ट वाज शाहबानू केस, ये हमने 11th में भी पढ़ा था, एंड इट वाज a case of a 62-year-old divorced Muslim woman who had filed a case for maintenance from her former husband. और सुप्रीम कोर्ट ने फेवर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर when we talk about divorce, तो डिवोर्स के अंदर डेफिनेटली वी हैव द वर्ड कॉल्ड एलिमोनी, which is very important.
डिवोर्स होने से ज्यादा, व्हेन अ वुमेन इज, अभी इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा चेंजेस अभी आया है. देयर वाज अभी रिसेंटली देयर वाज अ केस इन बेंगलुरु को, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट, मतलब की दैट केस. उसमें जो वुमेन थी, शी वाज वर्किंग एंड शी वाज यंग एंड शी हैड डिमांडेड सम crores of rupees, and so the judge had passed the order ki, is the woman deaf or dumb, and why does she need 6 lakh rupees per month to run the family? She can earn if she wants. There should be some reasonable amount. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है वुमेन को, क्योंकि हमारे यहाँ पर वुमेन के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ वुमेन इज डिवोर्स्ड, देन शी हैज टू लुक, अगर और बच्चों को अपने साथ में रखना है तो फ्रॉम वेयर इट विल कम, एंड फॉर दैट द वर्ड एलिमोनी इज देयर. एंड एज एन इंडियन, if you are a Hindu or a Muslim or a Sikh or Isai, you are equally, have the right. लेकिन जब ये मुस्लिम वाला केस हुआ एंड सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए किया, तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सॉ द ऑर्डर एज एन इंटरफेरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो इस चीज को एग्री नहीं करता. उनके अपने लॉज हैं, दैट यू नो, मतलब उनके लॉज, आई के नॉट मतलब की कॉमेंट ऑन दैट, बट यस, उनके लॉज बिल्कुल अलग है. ऑन द डिमांड ऑफ, और उस वक्त में क्या हुआ, व्हेन such things happened, on the demand of some Muslim leaders, the government passed, उस वक्त गवर्नमेंट आपका कांग्रेस, they passed the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act that nullified the Supreme Court judgment, क्योंकि उन्होंने वो जो एक्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग the women did not have the right. This action of government was opposed by many government women organizations, many Muslim groups, many intellectuals, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इफ यू आर एन इंडियन तो यू आर अंडर द सेम लॉ विच इज गवर्निंग एवरीवन. वो अलग बात है कि अगर आप अपने लॉ को लेकर चल रहे हो और आपको कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, देन इट्स ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू, इन आवर बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो अंडर 2 एक्ट्स आता है. एक हमारा आता है कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरा हमारा आता है हिंदू एक्ट. ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग चला रहे हो, देन यू आर अवॉइड ऑफ मेनी बेनिफिट्स दैट अदर कंपनीज गेट. आपको इजीली लोन वगैरह नहीं मिलता है. लेकिन जो हमारा हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है, जो फैमिली बिजनेस है, जिसको हम हिंदू यूनिफाइड फैमिली बिजनेस बोलते हैं, जिसमें दादा से बेटा, बेटे से पोता, पोते से परपोता जाता है, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है. लेकिन अगर आपको वो बेनिफिट्स चाहिए जो कंपनी एक्ट के अंडर है, तो यू हैव टू नलीफाई दिस एंड यू हैव टू अडेप्ट दिस, क्योंकि दिस कंपनी एक्ट इज गवर्निंग एवरी. और यही आपका जो है, इट इज द सेम थिंग फॉर मैरिज ऑल्सो. अगर हम हिंदू, हमारा हिंदू लॉ भी है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हमारी शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होती है. बट इफ वी आर गोइंग टू द कोर्ट, देन हम हिंदू मैरिज एक्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट हैज बीन अ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग आवर ओरिजिनलिटी. अगर आप उस लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हो, तो आप फॉलो करो. आपको सुप्रीम कोर्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन आकर नहीं बोलेगा. लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉ से. सो द नलीफाई, जो नलीफाई किया था उन्होंने, दैट वाज रॉन्ग. दिस, the BJP criticized this action of Congress government as unnecessary concession and appeasement of the minority community. यानी कि इस शाहबानू वाले केस से बीजेपी को सपोर्ट मिल गया ऑफ द मुस्लिम्स, बिकॉज उससे पहले वो वर्ड जो हिंदुत्व लिया जा रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू द रिलीजन. लेकिन इस केस ने उनको बताया कि इट इज नॉट अबाउट हिंदू धर्म, इट इज अबाउट कल्चर.
क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया एंड दे आल्सो सेड कि वो जो लॉ उन्होंने जल्दबाजी में विच दे हैव पास इट इज रॉन्ग. Similarly, I think अभी recently only just 2-3 years back only the ट्रिपल तलाक जो था उसको उन्होंने हटाया. इसको भी बहुत सारे जो आपके मुस्लिम लीडर्स थे दे टुक इट एज एन interference into their personal law. But if you look onto a broader ground, you would definitely say कि that was a very important step. क्योंकि मेरी एक रियल फ्रेंड थी, मतलब तैयबा करके, while I was in my training period. She had suffered a lot because of this. The next is the Ayodhya issue, a very controversial. The Ayodhya issue as a second significant development was deeply rooted to socio-cultural and political history pertaining to different perspectives from different stakeholders. As we believe that Ayodhya is the birthplace of Lord Ram and Mathura. मथुरा के अंदर भी अगर आप देखोगे, इफ यू हैव गॉन, तो जो आपका मंदिर और मस्जिद है वो बिल्कुल बिल्कुल सटा हुआ है. वेयर इज इन अयोध्या इश्यू द प्रॉब्लम वाज कि इन बिटवीन इट इज सेड दैट जो हमारा टेम्पल था उसको बंद करके जो मस्जिद के अंदर से बाहर जाने का, उन्होंने जो अंदर जाने का रास्ता निकाला था. Of course is controversial. In fact, I think it was in 2000 I've gone. We entered in that way only. जो what you call as conflict वाला था वहां पे लिखा हुआ था. Now everything is different. The significance of it involved contention regarding the birthplace of Sri Ram, one of the holy religious site, and its legal ownership. The significance of Ayodhya Ram Janmabhoomi site can be judged by the fact 500-year-long history starting from 1528. It is marked by numerous conflicts which are also documented in Lucknow, Barabanki, Faizabad district gazetters. मतलब उन gazetters मतलब जो newspaper published by the government, उनमें भी है. A 3-dome structure was built. 3-dome is ये वाला जो 3-dome वाला है ना, this is actually changed this year. ये जो word है, this has been changed this year. It was not 3-dome. इसके ऊपर भी controversy भी हुआ था. It was actually mosque, but it was this year reprint में इसको नाम change किया. At the site of Sri Ram's birthplace in 1528, but the structure had visible display of Hindu symbols and relics its interior as well as exterior. Therefore, Ayodhya Ram Janmabhoomi issue got linked to the national pride in its ancient civilization. मतलब 1528 से इस पर जो है conflict आपका चल रहा है. Over the years, this issue evoked into prolonged legal battle, जो कि 49 में पहले सील हुआ था, due to the onset of court proceeding. उस वक्त में तो it was said कि इसको बंद कर दिया जाएगा, structure को बंद कर दिया जाएगा. So there was nothing. In 1986, the situation regarding the 3-dome structure took a significant turn when the Faizabad district court ruled to unlock the structure, allowing people to worship there. The dispute had been going for many decades, as it is believed the 3-dome structure was built by Sri Ram at Sri Ram birthplace after demolition of temple. मतलब ये एक we don't have the proof, we don't have the evidences, but yes, कुछ हमारे जो ग्रंथ हैं वो इस बात को साबित करते हैं. Because there are other temples also. It is not about only about Sri Ram's birthplace. If you see over there, if you have gone over there, you have Ram Mandir, you have the Sita Rasoi, you have मतलब वहां पर इतनी सारी चीजें हैं जो evident है. However, although Shilanyas, यानी कि उसके लिए पत्थर रखना was done, but the further construction was prohibited. The Hindu community felt the concerns relating to the birthplace of Sri Ram were overlooked, while the Muslim community sought assurance of their possession over the structure.
Subsequently, tensions heightened over the ownership rights, even though there were some negotiations done, सामने आमने किया, लेकिन दोनों पीछे नहीं हट रहे थे. Both communities desired a fair resolution, but in 1992, following the demolition of the structure, some critics contended that it presented a substantial challenge to the principle of Indian democracy. It was, of course, a very, what you call as controversial, a very sad period in Indian politics. It is important to note that any society conflicts are bound, but however, in a multi-religious and multicultural democratic, these can be resolved following due process of law. तो law ने तो overrule किया, लेकिन वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे. Through a number of democratic and legal procedures, including court hearing, mediation, popular movements, finally with a 5-0 verdict of Constitutional Bench of Supreme Court. ये बहुत 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 जरूरी है, because this is not there in the earlier books. Since it has been added, as I told, the case was resolved. बहुत tension था. It was even anticipated कि it may lead to some violence, but ऐसा नहीं हुआ. This is because there were two verdicts, क्योंकि बाबरी मस्जिद के पीछे कोई ऐसा रिलीजियस कारण नहीं था, हमारे उसके पीछे राम जन्म जी का कारण था. तो इन दोनों को लगते हुए both of them were given equality. The verdict allotted the dispute site to Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust for the construction of temple and directed the concerned government to allot appropriate site for a mosque to the Sunni Central Waqf Board. In this way, democracy gives room for conflict resolution. तो अभी ऊपर आपने जो पढ़ा communalism, communities में मतलब की conflicts, secularism, protection of all the religion, and democracy where you are having a process जिसको हमने follow की. This upholds the inclusive spirits of constitution. It was resolved after following the due process of law based on evidences such as archaeological excavations, historical records. आपको मैंने बताया कि अगर आप वहां पर जाते हो या गए हो तो you must have seen भूमि, राम जन्म भूमि एक जगह है, बट वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एविडेंटली बताती, जो हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है. If we talk about Sarayu Nadi, it is there. If we talk about other areas which are there, वो भी है वहां पर. वो evidences हम लोगों के लिए है. The Supreme Court's decision was celebrated by the society at large. It's a classical example of consensus, यानी कि मिलजुल कर on a sensitive issue. In fact, जिस दिन ये verdict आना था, it was anticipated that it may lead to violence. But it shows the maturity of democratic ethos which are civilizationally ingrained in India. लेकिन वही हुआ, मिलजुल कर हमने उस चीज को लिया. This is the judgment in the box. तो अब 89 के बाद, because as we have seen that there have been a power play, so there arise कि what should be the consensus. क्योंकि अगर हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो what will happen? The power will be with no one. Stability will not be there. The period after 1989 is seen sometime as period of decline of Congress and rise of BJP. अगर आप देखो तो जो electoral performances, if you see this graph, आप देख सकते हो red is BJP and purple is Congress. तो initially 84 में it was सबसे highest, and 2019 में अगर आप देखो तो 282 2014 में and 303 in 2000. So this shows कि this has been in the rise. शुरू में it was थोड़ा नीचे था, फिर धीरे धीरे it started equaling.
एंड देन इफ यू सी 2004, अगर आप 2004 का ग्राफ देखते हो तो ऑलमोस्ट इक्वल, 138, 148, 145. But if we look at 2019, hardly 52 and BJP 303. So this is how it has come to work. You will notice that BJP and Congress, ये जो हमने पढ़ा है वो ये है कि they were engaged in tough competitions. You will notice since 89 the votes pulled by two parties add up to more than 50%. Look at the both charts showing Congress and Janta family of parties. The political competition during 90s is divided between coalition of UPA and coalition of ND. But after 2004, the party politics have changed. 2014 काफी अच्छा रहा, 19 बहुत अच्छा रहा. इस साल में definitely there is win, but the win is not a win-win situation. It is actually win-loss situation. In the elections of 2004, the Congress party too entered into coalitions. The NDA was defeated and new coalition known as UPA came, which is led by BJP. The government received support from left front parties. The election of 2004 also witnessed a partial revival of Congress party because उनके जो number of seats है वो थोड़े ऊपर आए जैसे इस बार आए हैं. However, in 2004 there was a negligible difference. अभी मैंने बताया था ना 138 and 145 वो यही वाला. The Congress-led UPA completed its term despite left parties withdrawing the support in 2008 on Indo-US nuclear deal. Elections for 15th Lok Sabha were held in 2009. It witnessed a rise in number of seats from 145 to 206. And Congress led the UPA government and Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. और उसके बाद डेफिनेटली देयर वर आई थिंक 3 टर्म्स उन्होंने किया था. 2009 के बाद 9 फिर 14 ये आया था आपका एनडीए गवर्नमेंट, सॉरी एनडीए गवर्नमेंट. भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर्ड नरेंद्र मोदी, तब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, as its prime ministerial candidate in September 2013 and it got a clear majority in 2014. BJP won 282 seats after 30 years, जिसको सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिला था. बट despite single majority, BJP did choose to form the NDA government with coalition partner. ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कहीं से भी सपोर्ट उनका हिल जाए. अगर उनको नहीं, मतलब कि दे आर नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू द पीपल हु आर देयर पार्टनर्स, देन हो सकता है अगले इलेक्शन में जब जरूरत पड़े तो नोबडी. तो उन्होंने बहुत ही क्लेवरली दे हैड टेकन अप दिस डिसीजन. Year 2014 was probably watershed moment of Indian politics. They took decisions in social issues, foreign policy, economic policy. Watershed मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी जिसको हम बोल. The BJP again emerged victorious with 303 with its own seats. With even when BJP is getting full majority, the recognition of coalition politics is still relevant. Thus, the party system has now changed dramatically from what it was till 70s. 70s में क्या था? Congress was in a way sheltering the other, but and now it has now come into कि BJP जो है, it is giving equal importance to all those parties which are with them. और ये आपका जो है बोर्ड का क्वेश्चन है. इफ यू हैव द बोर्ड पेपर, दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन. जो करंट है हमारा, ये दिखाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है नाउ, दे आर नो डाउट, इट इज ऑलवेज, हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो पार्टी, सॉरी, पावर के लिए ही आते, बट स्टिल
कुछ इश्यूज जैसे हमारा जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था तो इनिशियली इट वाज नॉट मतलब कि एक्सेप्टेड, या सोशल क्लेम्स या रिलीजियस, लेकिन अब जो है हमने धीरे धीरे सभी पार्टी, जो भी पार्टी पावर में आती है वो इस चीज को जो है दे ऑल्सो फॉलो इट। फर्स्ट, agreement on new economic policies. While many groups are opposed, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है इट इज एन इनडायरेक्ट colonization, लेकिन most political parties are supporting. Most parties believe that this would lead to country to prosperity and status. यानी कि अगर मान लो ये मतलब कि ए पार्टी नहीं बी पार्टी आएगी तो भी वो उस चीज को फॉलो करेगी। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट, जो हमने मंडल में पढ़ा था। पहले दे वर नॉट गिवन, लेकिन जब वो सामने आए, इनिशियली आपको भी पता कोई आपके सामने आएगा आप मना करते, लेकिन बाद में एवरीवन अग्रीड that social and political claims of backward caste need to be accepted. And now every party support reservation seats for the backward classes in education and employment. थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ द, जो आपका अलायंस पार्टी आया था, वो जो अलायंस पार्टी था उससे क्या हुआ, स्टेट पार्टीज आई। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ दोस रीजनल पार्टीज इनटू द नेशनल पार्टी। As we saw, state level parties are sharing power at the national level and have played a central role in country's politics of last 20 years. After this, as I said, after 1992, जब से आपका ये alliance form हुआ है, they are also getting equal participation. You can say they are also being consultation. And last but not the least is emphasize on pragmatic consideration rather than ideological positions. पहले मैंने आपको बताया जो आपकी पहली पार्टीज होती थी वो आपकी आइडियोलॉजीज होती थी। सीपीआई का आइडियोलॉजी था सोशलिज्म, इंडियन नेशनल का कुछ और था, लेकिन अब क्या है, वी आर ऑल्सो लुकिंग इनटू द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट आर हैपनिंग rather than ideological positions and political alliances without ideological agreement. क्योंकि आइडियोलॉजी में आप कभी नहीं जा सकते। दोज पार्टीज विच आर सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप आइडियोलॉजी में देखोगे तो जमीन आसमान का डिफरेंस है, बट कीपिंग इट on one side they agree on what we call as practical application. Thus most parties of the NDA, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, did not agree with Hindutva ideology, yet they came together to form a government and remained in power for full term. So these are the momentous changes and are going to shape politics in the near future. That is where it has been, where it started and how it has come. We started the study of politics with the discussion how Congress came, and now what were the things that happened. But politics is based on certain implicit agreement among main political actors. Thus, even as political parties act within sphere of concessions, popular movements, organizations, new form, vision, pathway of development, issue of poverty, displacement, etc. are being put on the political agenda. पहले ruling was there, और रूलिंग के लिए व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ वन पार्टी, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ अनदर पार्टी। अब रूलिंग के लिए नॉट ओनली द आइडियोलॉजीज एक तरफ है, मेन पार्टी अपना ले रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो बाकी चीजें हैं विच इज मोर इंपॉर्टेंट, दे आर बीइंग वॉइस्ड, उनकी भी आवाज सुनी जाती, लाइक जस्टिस, डेमोक्रेसी, कास्ट, जेंडर, पहले ये सब चीजें नहीं थी। How many of us knew about any issue that was earlier there? किसी को नहीं पता था। Women issues,
हु कुड डू इट। लेकिन आप अगर हम pragmatically, अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना, तो वो इश्यूज लेकर आए हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिपल तलाक का बताया। अब सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो चीजें आती हैं, उनको पॉलिटिक्स के अंदर एज एज एन एजेंडा लिया जाता है। ऑल वी नो इज दैट democratic politics is here to stay, and it will unfold through a continuous turning of some factors। धीरे धीरे इनमें से हो सकता है कुछ चीजें हो, कुछ चीजें हो सकता आगे आने वाले टाइम में ना हो, बट इट विल डेफिनेटली, मतलब और जो है फिस्कर, इट मे बिकम मोर रिफाइंड। एंड जो अभी हमारा करंट गवर्नमेंट है, इट हैज गिवन सो मेनी what you say strategies, policies, they have come up with their बहुत सारे नए नए जो उनके स्कीम्स हैं उनके साथ। एंड इफ यू वांट, यू हैव टू गो टू द साइट ऑफ प्लानिंग कमीशन, जिसको अब हम नीति आयोग बोलते हैं, जिनके चेयर, जो आपके मेन चेयरपर्सन है, आपके प्राइम मिनिस्टर है। व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर टेकिंग, हाउ वो लोग जो है पॉलिटिक्स को शेप अप करने में दे आर गेटिंग द सपोर्ट, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज दे आर फॉलोइंग, जिससे बाद में everything comes into a continuous series। So this is what we call as a chapter, the end chapter, in fact, the recent developments in Indian politics। और इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कुछ और है। इस चैप्टर को प्लीज कभी इग्नोर मत करना, इसके पीछे दो वजह है। देयर वर सम चेंजेस दिस ईयर मेड इन दिस चैप्टर। इसमें एनडीए के पूरा लास्ट ईयर में जो है ना, मतलब अगर आप उसमें सपोर्ट मटेरियल में देखोगे, उसमें है, विच आई हैव ऑलरेडी डन इन द समरी सेक्शन, कि एनडीए ने क्या किया है, एनडीए के जो आपके नीति आयोग में क्या क्या है। देर आर 25 प्लेटफॉर्म्स वेयर वी आर एबल टू अपने आप को रिप्रेजेंट करें। वो वाला सारा जो पोर्शन है, दैट इज देयर इन द सपोर्ट मटेरियल ऑफ पॉलिटिक्स, जो आपका रेफरेंस मटेरियल उसमें है। Secondly, some of the significant changes were made in this chapter, and this chapter is also dealing with very current trend of politics, which right now is there। So this chapter, from all those factors, is very important from both point of view। किसी भी चैप्टर को आप कभी छोड़ते हो, कोई एक दो क्वेश्चन को छोड़ते हो, कोई बात नहीं, इस चैप्टर से मत करना। इट्स मतलब कि सारे के सारे जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर in our next class। And when you are reading this chapter, जब आप रिवाइज करोगे, तो प्लीज रीड ईच एंड एवरीथिंग विच इज गिवन। जैसे इसमें लिखा हुआ देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नाउ व्हाट दे आर, उनका क्या है, व्हाट इज देयर प्लेज, दैट करप्शन हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टिकल्स, जिसकी वजह से इतने साल हमारे जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्रेस नहीं रहा है। द रीजन इज की पीपल जो है वो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, और अपनी बात मनवाने के लिए दे टेक द हेल्प ऑफ करप्शन। ये तो कॉमन चीज है। दे डोंट वांट थिंग्स टू कम, दे डोंट वांट इक्वालिटी टू प्रिवेल। जो लोग मालिक बन चुके हैं, वो क्यों चाहेंगे कि ये जो मतलब की चीजें ऑलरेडी चल रही हैं वो हट जाए, जिनको उन चीजों से फायदा मिल रहा है, तो सब उसके लिए क्या होता है, दे ब्राइब। So that becomes a major obstacle in the economic, political, and social progress। I believe that stakeholders such as government, citizens, private sectors need to work together to eradicate the corruption। और उसके लिए whatever we need to follow, we need to do it। And this is the new system जो उन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारा ईवीएम सिस्टम। एंड इट इज ऑल्सो सेट कि हम इस सिस्टम के साथ में जो है, इफ वी फील देयर इज ऑल्सो VVPAT, जो आपको जो है इट कैन ऑल्सो टेल यू वेदर इट हैज बीन टैम्पर्ड और नॉट। तो दिस इज द चैप्टर, recent developments in Indian politics, right?